Jai Hind students. In this chapter, chemical reactions and equations, this is the second video, and in this video I am going to discuss about balancing of the equations, balancing of chemical equations. If any chemical equation is given, how to balance that chemical equation, how to balance that chemical reaction. So please remember that in balancing of equations, in balancing of equations, you have to first balance the number of oxygen, then number of hydrogen, then other atoms. In balancing the equations, you have to first balance the number of oxygens. Balancing means on the RHS side, on the reactant, on the product side, on both sides the number of atoms should be equal. So first we are going to equal the number of oxygen, then we are going to equal the number of hydrogens, then हम बैलेंस करेंगे other atoms को. Okay, let's take an example. I've given a question like Mg plus O2 that gives MgO, magnesium plus oxygen that gives magnesium oxide. This is the reaction. So देखते हैं क्या equation balanced है. Oxygen here is 2 and oxygen here only one oxygen, and magnesium here is one magnesium and here is one magnesium. So we have to balance this equation. Oxygen is present here, hydrogen is not present here, and magnesium is present here. So first we have to balance oxygen. So how to balance oxygen? Let's see. Here there is 2 oxygen, LHS 2 oxygen, RHS 1 oxygen. So we have to balance the number of oxygen, तो multiply it by 2. यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 बन जा 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी. Then Mg plus O2, 2 MgO. I multiplied this part by 2. अब देखते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, 2 1 जा 2 and oxygen is 2 on the both side, left hand side and right hand side, both sides oxygen is balanced. But अब देखते हैं मैग्नीशियम को. मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए, 2 मैग्नीशियम, और यहाँ पे ओनली 1 मैग्नीशियम है. अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन में ये था. अगर हम अब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में LHS में आ गए 1 मैग्नीशियम एंड RHS में आप देख रहे हैं 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2. देन इट बिकम्स 2 Mg प्लस O2 दैट गिव्स 2 MgO. देन वी हैव टू चेक. मैंने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, देन अगेन मैंने मैग्नीशियम को बैलेंस किया. अब देखते हैं, ऑक्सीजन इज 2, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन हियर इज ऑल्सो ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम एंड हियर इज ऑल्सो 2 मैग्नीशियम. Okay, in the similar way I am going to take another reaction. Let's take another reaction. The reaction is Fe plus H2O that gives Fe3O4 plus H2. This is the reaction. Iron plus water that gives iron oxide plus hydrogen gas. How to balance this? कैसे बैलेंस करेंगे? पहले आपको पता है, फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, देन वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, देन अदर एलिमेंट्स. फर्स्ट चेक द ऑक्सीजन. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 4 ऑक्सीजन. LHS ऑक्सीजन के केस में 1 ऑक्सीजन, RHS 4 ऑक्सीजन है. सो हम इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 1 जा 4, 4 ऑक्सीजन. सो अगेन राइट करते हैं इसको, H2O वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, Fe3O4 प्लस H2. देन देखिए ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन एंड हियर इज ऑल्सो 4 ऑक्सीजन. देन वी आर गोइंग टू बैलेंस हाइड्रोजन. चेक करते हैं. हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, हियर 8 हाइड्रोजन. ऑन द RHS राइट हैंड साइड ओनली 2 हाइड्रोजन. सो हाउ टू बैलेंस इट?
we have to multiply here by 4. 4 to the 8 and 8, both sides are balanced. So write the equation again. 4H2O, that gives Fe3O4 plus multiply it by 4. Multiply it by 4H2. We have to multiply it by this and here we multiply it by this. Okay. अब देखिए हाइड्रोजन and ऑक्सीजन both are balanced. 4 to the 8 hydrogen, 4 to the 8 hydrogen. 4 1 the 4 oxygen, 4 oxygen. Oxygen and hydrogen are balanced. Then we are going to balance the other elements. Here the other element is iron. And we can see that for iron on the LHs and RHs. On the LHs only one iron is present, that is 1. On the RHs there 3 iron is present, that is 3. So how to balance it? You have to multiply it by 3. 3 ones are 3 and 3. Both are balanced. Then 3Fe, again write the equation. 4H2O, that gives Fe3O4 plus 4H2. Then check here whether all the elements are balanced or not. Iron 3, iron 3. Oxygen 4 ones are 4, oxygen 4. Hydrogen 4 to the 8 hydrogen and 4 to the 8 hydrogen. Okay, thank you.